Students, how are you all? I hope you are good and you are doing well in studies. So let's see what we are going to learn today. And the topic is distance time graph. So in distance time graph, we can represent motion. Motion means an object is said to be in motion when it changes its place from A to B. Fine. So we can represent motion of an object on a graph. That we'll learn today. Next, we'll learn how to make uniform and non-uniform motion. Third thing, slow and fast motion. And then we'll plot a graph for an stationary object. ठीक? Stationary means होता है object which is at the rest position. Fine. And the last one is we'll calculate the speed with the help of graph. And last but not the least is we'll do some questions. We'll do some questions based on distance time graph. Now let's come to the first topic, that is a distance time graph. So these are the various steps I have written. One by one I will take one step and we'll make a graph. So the normal graph paper is this. This is a graph paper. A normal graph paper. We generally use this graph paper to make the different types of graph. So if you do not have this paper, not to worry. You take your book, pencil and a scale and let's see how to make a graph. First of all, this is your page. Now I have a scale. What I do, I divide my page in 4 halves. So let's divide your page in 4 halves. So I have divided my page in 4 halves. 1, 2, 3 and 4. Means I'll make lines which are intersecting on a particular point and will take it as O. ठीक? अब देखो मुझे यहाँ 4 quadrants मिल गए हैं. 1, 2, 3 and 4. Fine. So let's rub all and just take only one quadrant. Now this is the line on which this is the. Now we have got one quadrant. Now on this we'll make a graph. So first of all we'll take axis. Axis means ये लाइन किस एक्सिस पे है और ये लाइन किस एक्सिस पे है. दिस लाइन एंड दिस लाइन. सो विल टेक नेक्स्ट इज वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स जिसके नंबर वेरी करते हो. ठीक है. तो वन कैन बी एक्स, अदर कैन बी वाई. सो आई हैव टेकन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस एंड वाई. एक्स जो होगा वो हॉरिजॉन्टल लाइन पे होगा, y vertical line पे होगा. Fine. Now next is choose a scale. If you see this graph paper, you can easily see that there are boxes and each box is similar. Means this is one box, this is one box, this is one box and all the boxes are similar. Suppose if I color one box, this box is exactly similar to this box. Fine. So now taking scale means we'll choose our unit. Now choosing a scale means we'll choose one unit. What is one unit? One box. One box को आप क्या consider करते हैं? ठीक है. तो अगर so one box can be किसके लिए? Distance के लिए भी and time के लिए भी. Now choose scale. Scale choose करने के लिए please see this graph paper. You can easily see all the boxes are equal. तो अगर एक बॉक्स को मैं कहूँ 1 तो दूसरा क्या होगा 2, तीसरा क्या होगा 3. This is called taking scale. एक बॉक्स को आप how much you are taking. तो यहाँ मुझे क्या लेना है? डिस्टेंस के लिए भी लेना है और टाइम के लिए भी लेना है. फाइन. तो 1 यूनिट को मैं कंसिडर करती हूँ 1 मिनट फॉर टाइम. ठीक. अगेन जो 1 यूनिट होगी आई विल कंसिडर इट एज, एक तो टाइम के लिए हो गया, अब डिस्टेंस के लिए कंसिडर करो. सो आई एम टेकिंग एज 10 मीटर. फाइन. तो ये डिस्टेंस के लिए हो गया, ये टाइम के लिए होगा. अब डिस्टेंस जो है वो यहाँ पुट होगा, टाइम यहाँ पुट होगा. फाइन. सो व्हाट वी डू, लेट्स मेक इट मोर बिगर. नाउ वी हैव चूजन द स्केल. दिस इज स्केल. What is scale? Scale means 1 यूनिट को मैंने 1 मिनट माना है और 1 यूनिट को मैंने डिस्टेंस के लिए 10 मीटर माना है. See, अब this is the point of intersection. Okay. Now this side
side write down time, and time I have taken in minutes. So write down minutes. This side, vertical side, I'll write distance. So DIST, and I will take 10 meter. It is in meter, so it is in meter. Now we'll start writing. 1 यूनिट को मैंने 1 मिनट माना है, तो पहले जो बॉक्स होगा वहां पे क्या लिखेंगे 1 मिनट. फिर सेकेंड बॉक्स में क्या आएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 मिनट. थर्ड बॉक्स 3 मिनट. फोर्थ बॉक्स 4 मिनट. 5, 6, 7. फाइन. सो दीज आर द वेरियस बॉक्सेस. अब देखो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 मिनट. इन दोनों का डिफरेंस 1 मिनट. 3, 4 1 मिनट. 4, 5 1 मिनट. तो हर बॉक्स की यूनिट क्या हो गई 1 मिनट. फाइन. अब दिस साइड भी फर्स्ट क्या हो गया 10 मीटर, देन अगेन 20 मीटर, देन 30 मीटर, then 40 meter, then 50 meter, then 60 meter. Fine. So this side distance is in meter and this side time is in minutes. Now let's make the graph. So I have chosen a scale. Now mark the values. So I have also put the values. Now let's see. 1 मेरी कार यहां से चलना शुरू हुई. अब जब 1 मिनट हुआ था तो मेरी कार कितनी चली. इफ आई हैव अ टॉय कार, तो टॉय कार जो है एक मिनट में 10 मीटर चली. फाइन. तो यहां पहुंची. फिर जब 2 मीटर हुआ तो वो कहां पहुंच गई 2 पे. सी 2. जब 3 मिनट हुआ तो वो कहां पहुंच गई 30 मीटर कवर कर लिया. जब 4 मिनट हो गए 4 मिनट, तो उसने कितना कवर कर लिया 40 मीटर. जब वो 5 मिनट हुए थे तो कहां पहुंच गई 50 पे. जब 6 मिनट हुए तो कहां पहुंच गई 60 पे. ठीक है. सो कैन यू सी ए स्ट्रेट लाइन, दिख रही है ना. अब क्या करेंगे, विल ज्वाइन दीज लाइन्स. फाइन. 1 इज दिस, फिर 1 इज दिस, देन इट इज लाइक दिस. Fine. Now can you see that? Now you just draw line. Join all the dots. Fine. Can you see a straight line? If it goes, it will also go straight. 30, then it comes to 40. 50. 20, 30, 40, then it's come to 50. 50 is here. Okay. So we'll join this line again. So can you see that 1 minute हुआ तो कितना चली, कितना कंप्लीट किया 10 मीटर. जब 2 मिनट हुआ तो 20 मीटर. जब 3 मिनट हुआ तो 30 मीटर. जब 4 मिनट हुआ तो 40 मीटर. जब 5 मिनट हुआ तो it is coming to 50 meter. When you make this graph on this, so all these things will be similar. Why? Because इसमें जो boxes हैं, they all are similar. So let's see. So this is how we can make a distance time graph. Let's check. Did you understand? No? Let's revise once again. Fatafat, quick revision. Now, first of all, you will make a 90 degree angle. बना लिया angle. Point of intersection को रखेंगे O. एक लेंगे x axis, अदर लेंगे y axis. यहाँ रखा time t, यहाँ रखा distance d. Fine. अब we'll mark the values. Values किसके? जो आपको values दी हुई है. Suppose time अगर मिनट में कहा है तो मिनट, और डिस्टेंस किस में कहा है मीटर में, तो here it is मीटर. नाउ मार्क द वैल्यू 0, then 1, then 2, then 3, then 4. Here also 10, 20, 30 and 40. ये सारे नंबर्स इस तरफ आएंगे. ठीक है. And then what we do? We will add like this. 3 and here it is 4. And then by joining these intersection, we'll make a line. So this line shows that your car, your bus, your bullock cart, they are going straight. Means they are going in motion.
How come? Distance they are traveling and time they are consuming. So in this way we can make a distance time graph. Let's see some more graphs so that you understand better. Now let's see the uniform motion and the non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion. So to understand the word uniform, uniform means होता है equal, covering equal distance in equal interval of time. Equal interval of time. जैसे equal interval means यहाँ देखो, it is very easy. From a small data you will easily understand. You suppose this is in minute and this is in meter. Fine. This is in again minute and this is in meter. Fine. Now you can see what do you mean by term uniform? Uniform means equal distance. Equal distance कैसे? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10. फिर कितना कवर हुआ? 10. फिर कितना कवर हुआ? 10. तो देखो डिस्टेंस क्या है? हर बार डिस्टेंस क्या है? इक्वल कवर हो रहा है. ठीक, ये हो गया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इक्वल इंटरवल टाइम मीन्स इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है? 5 मिनट. इनके बीच का डिफरेंस अगेन इट इज 5 मिनट्स. अगेन द डिफरेंस इज 5 मिनट्स. सी तो व्हाट वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, 5 मिनट में कितना चलता है? 10 मिनट. फिर अगले 5 में कितना चलता है? 10 मीटर. फिर अगले 5 में कितना चलता है? 10 मीटर. तो व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? Uniform motion is that motion in which object is covering equal distance. दोनों सब में क्या है? In all the distance is equal, 10, 10, 10. Fine. In equal interval of time. So this is called uniform motion. Now let's plot a graph for uniform motion. So we'll take a scale again. X-axis, Y-axis. So here it is X-axis, here it is Y-axis. This is the point of intersection. Now we'll put time here and distance here. So distance is in meter and time is in minute. Okay. Now let's see. First is 5, 10, 15, 20. Okay. This side it is 10, 20, 30 and 40. Now let's start. तो फर्स्ट 5 मिनट्स में, जब फर्स्ट 5 मिनट कितना पहुंचा? 10 मिनट्स में. तो 5 मिनट्स में, सो फर्स्ट 5 मिनट्स में कितना चला? 10 मीटर. सो 10 मीटर 5 पे लीजिए लाएंगे 10 मीटर. ओके. देन जब 10 मिनट्स हो गए तो वेयर इट कम्स? 20. सो हेयर इट गोज टू 20. ओके. 15 मिनट्स पे 30. तो 15 मिनट्स पे कहां पर आया? 30. फिर ये क्या हुआ? ये कहां पर आया? 40. Now can you see again? See, it is what? A straight line graph. Fine. So it is again a straight line graph. This shows a uniform motion. इसका मतलब जो गाड़ी है वो आपकी वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है और उसका इंटरवल कितना है? इक्वल टाइम है. मीन्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है. तो यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ. Whereas when we come to non-uniform motion, let's make a graph for non-uniform motion. So again we plotting a graph. You also make with me children x-axis, y-axis. Okay. This is a point of intersection O. Fine. Now let's put time here and distance here. So first time is 5, then it is 10, then it is 15 and last is 20. पहला कितना चला? लेकिन स्केल हमने 10 मानी है तो 10, 20, 30, 40. ओके. फर्स्ट 5 मिनट में कितना चला? 10. फिर नेक्स्ट जो 10 मिनट्स में कितना चला? सिर्फ 12. यहाँ तक बस. ये 20 पे नहीं आएगा. कहाँ पर आएगा? ये सिर्फ 12 तक. 15 मिनट्स में कहाँ पे पहुंचा? 20 पे. यहाँ पर पहुंचा ये. ओके. एंड देन जब 30 पे कब पहुंचा? जब कितने मिनट हो गए? 20 मिनट. फाइन. तब कहीं जाके तो आपका कर्व थोड़ा सा ये ग्राफ ऐसे कर्व आ जाएगा. It is a bit curved graph. So this type of graph is known as non-uniform motion. Fine. Can we see a little curved graph? Yes. So this curved graph is known as non-uniform
फर्स्ट में तो 10 तक चला था, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये कहाँ तक चला, ये सिर्फ 12 मिनट्स तक ही चला यहाँ पे। फिर 15 मिनट्स में तो ये पहुंच गए 20 पे, ठीक है, 20 पे पहुंच गए। फिर 20 मिनट्स में पहुंचते पहुंचते इन्होंने कितना कवर्ड किया डिस्टेंस, अराउंड हाउ मच डिस्टेंस दे हैव कवर्ड, 30. So can you see it? It is a little bit curved graph, or at times the graph is like this. They all are non-uniform graph. So this type of zigzag graph shows the non-uniform motion. So what is non-uniform? Non-uniform means the object is not covering distance in equal interval of time. टाइम इज इक्वल, टाइम बराबर दे रहे हैं, मगर ऑब्जेक्ट ही नहीं चल पा रहा। कभी वो स्लो चलता है, कभी वो फास्ट चलता है, कभी वो स्लो चलता है, कभी वो फास्ट चलता है। नॉन यूनिफॉर्म मीन्स अनइक्वल डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे है, अनइक्वल, और नॉट कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. So this is uniform and this is non-uniform. Take a line in between so that we can easily differentiate slow motion and fast motion. Make a graph. So fatafat you also. So let's make a graph. So you do one thing. You also take a paper and a pen and start making with me. So that by the end of this, you are also able to differentiate the slow motion and fast motion. So let's make a graph. The first line, the vertical line, and then come to the horizontal line. Horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis. This side also we have made x-axis and y-axis. Okay, now x-axis mein what we put? Time. Here what we put? Distance. Here what we put? Time. And this side what we put? That is distance. So either you can write full or you can write like this. It is up to you. Fine. So this side it is distance and this side it is time. Okay. Now the next and very important thing is taking scale. अब हमें लेना है scale. How to take a scale? ठीक. अब बिफोर टेकिंग स्केल थिंक ऑफ, ये रेसिंग कार है तो स्केल किसके लिए लेना पड़ेगा? पहला तो टाइम के लिए लेना पड़ेगा, सेकंड किसके लिए? डिस्टेंस के लिए. तो एक यूनिट को आप क्या कंसिडर करेंगे? टाइम का स्केल किस में लेंगे? सो इट इज इन आवर, सो कंसिडर इट एज 1 hour. अब अगर टाइम इज इन आवर्स तो डिस्टेंस कैन बी इन किलोमीटर. सो दिस इज 10 किलोमीटर और 100 किलोमीटर. Fine, it is if data is not given. What is data? Like in some questions, time and distance for a particular object is already given. आपको assume नहीं करना पड़ता है. But if data is not given, then we are assuming कि अगर बुलक कार्ट है तो वो स्लो चल रही होगी तो it will take more time. तो हमने 1 घंटे से शुरू किया है. Fine. So let's put the value. This is again O, the point of intersection. 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Again 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Now place the distance. Distance is in kilometer. So mention here kilometer. Time is in hours. Here also time is in hours and distance is in kilometers. Okay. Now let's start 100. Then it is 200, 300, 400, 500, 600 and 700. This side also start from 100. If this is 100, this is 200. See दोनों के पीछे डिफरेंस कितना है? 100. क्यों? Because we have taken a scale की एक यूनिट कितनी होगी? 100 की. 300, 400, 500, 600 and 700. This is 600. This is 500. Okay. Now let's make for bullock cart. My bullock cart is here and my racing car is also here. Fine. So this is my racing car. So this is my racing car and this is my so now my bullock cart and my racing car both are ready. अब slowly
Slowly it is moving, and it is moving. Fine. So this has moved. Now अब इस पे आते हैं. My car जैसे ही रेसिंग कार स्टार्ट हुई, जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, it is zoom. Fine, because it goes fast. So see the difference in the graph. When the motion is slow, अगर motion slow होगा तो graph is towards time. Graph किस में होगा? Time में होगा. See, now I'll make this. This is motion. Shows the motion of a car. ठीक? अगर if motion is slow means it is taking more time. So graph is towards time. Fine. So time here is more. Fine. And distance it is consuming less. ठीक? Slow है ना? Slow चलेगी, धीरे slow. So see, graph is towards time. Whereas in case of fast motion, the moment रेस शुरू हुई, so time कम होगा and distance fast होगा. तो let's see, when it comes to 7 hours, it has covered a distance of only 250 kilometer in 7 hours. Whereas when we consider this distance, so in around 4 hours, सिर्फ 4 घंटे में ही it has covered the distance of 700 kilometer. Fine. So in racing car क्या हुआ? Time कितना लगा? Less. And distance जो हुआ वो किस में हुआ? It is more. So the graph is towards distance. So you can easily compare. This is graph is towards, जो graph है, it is towards time. In this is motion. Fine. So the graph is towards distance. So I hope you can easily understand the slow motion and fast motion. Now let's see how to calculate speed with the help of this graph. So I have plotted this graph. This is distance, time. So time I have taken in minute and distance is in meter. Fine. Now this is a distance time graph of a moving boy. So boy is covering a distance of 100 meter in 10 minutes, then 200 meter in 20 minutes, then 300 meter in 30 minutes, then 400 meter in 40 minutes. देखो ठीक है. तो ये कैसा ग्राफ बनाए? यूनिफॉर्म ग्राफ लेना. ठीक है. Now let's see how to calculate the speed. So the question is find speed of a boy from A to C. A to C उसकी स्पीड निकालनी है. A से C तक जब वो चल रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम A, तो वहां से उसकी स्पीड कितनी हुई. ठीक. So let's see, the formula of speed is, what is speed? What is speed? Speed is a distance covered by an object at a particular time. Or what is speed? Speed is equals to distance per unit time. So speed is equals to distance, total distance covered upon total time taken. Let's see the total distance covered between A to C. अब देखो यहाँ पे 100 है, 100, 200, 300. इसका मीन्स यहाँ है 0. O. It is not 0, it is O. So यहाँ से यहाँ 100, 200, 300. C तक निकालना है. So C तक निकालना है पॉइंट, यहाँ से नहीं, O से नहीं, A से. So यहाँ से यहाँ तक 100, यहाँ से यहाँ तक 200. So distance between 100 to 300 is what? 200 meter. Fine. Now see the total time. Total time कहाँ से लेना है? A से C तक. तो this we will not consider. 10 minutes यहाँ A से A to C. Fine. A to C. So 10 minutes यहाँ, 10 minutes यहाँ. How many minutes? 20 minutes. ठीक है. So if we cancel this, so answer will be 10 meter per minute. What is 10 meter per minute? Speed.
किसकी स्पीड? ऑफ अ बॉय. सो सेकेंड क्वेश्चन इज फाइंड द स्पीड ऑफ C to D. CD की आपको स्पीड निकालनी. CD मीन्स जब बॉय C से D डिस्टेंस कवर कर रहा है, ये डिस्टेंस, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? ठीक. सो CD. सो अगेन यू विल टेक फॉर्मूला दैट इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन. सो व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस कितना है? C पे दिस इज 300, D पे दिस इज D पे दिस इज अराउंड 400. So what is the distance between C to D? It is 100 meter. C to D 100 meter है ना? अब let's see what is the time. So time कितना है? Again it is. So time is C to D. Time is again how many minutes? 30 to 40, 10 minutes. Fine. Now you just cancel it. If you cancel, answer will be 10 meter per minute. So this is the speed. This is the speed of a boy while covering a distance from C to D. Okay. Now let's see one more question. Covering a distance from A to C. यहाँ हो सकता है स्पीड उसकी कुछ और हो, ठीक है, मगर हमें किसकी निकाली है? A to C. A to C जब वो बच्चा चल रहा था तो उसकी स्पीड क्या थी? 10 मीटर पर मिनट. इसका मतलब 1 मिनट में वो 1 मिनट में वो 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा था. फाइन. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द स्पीड. लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉय. मतलब जब बॉय ने शुरू किया O पॉइंट से D पॉइंट उसका लास्ट पॉइंट तक था. When a boy started from O and end till D, what was the average speed? So what was the average speed? Let's see. So what is the formula of speed? Average speed is equals to total distance upon total time covered. Fine. So total distance, let's see. So यहाँ से यहाँ तक कवर किया. 0 to A 100, फिर A to B again 100, so it is 200. B to C 300, C to D again 100, so 400. So A तक पहुंचने में 100 डिस्टेंस, B तक 200, C तक 300, D तक 400. तो बॉय का टोटल डिस्टेंस क्या आया? इट इज 400 मीटर. नाउ लेट्स द टोटल टाइम. बॉय ने यहां से शुरू किया. दिस इज 10. A तक पहुंचने में 10, देन इट इज 20, C तक इट इज 30, D तक इट इज 40. So it is 40 minutes. Fine. Now if you cancel, the answer will be again 10 meter per minute. So what is the average speed? Average speed is 10 meter per minute. Fine. Per minute. ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि this motion is which type of motion? Uniform motion. Why? Because the boy is traveling equal distance, 100, 100, 100, 100. Equal distance in equal interval of time. 10, 10, 10, 10. हर बार क्या हुआ? 10 बढ़ रहा है. ठीक है. तो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जब होगा तो ग्राफ कैसा बनेगा? यूनिफॉर्म. एंड दिस वी हैव सीन ऑल्सो. हर बार आंसर इज कमिंग 10 मीटर पर मिनट. दिस शोज दैट वो यूनिफॉर्मिटी से द बॉय इज मूविंग. फाइन. आई होप यू कैन अंडरस्टूड इट दिस वेल. विल डू वन मोर क्वेश्चन अंडर दिस हेडिंग स्पीड. Now let's see question number 1. You need to find out speed. So first of all, tell me what is speed. What is an speed? So speed is a distance covered by an object per unit time. जितना distance cover हुआ है और जितनी time में cover हुआ है, that is its speed. Okay. So let's find out. The first question I am asking. If you know the answer, please write down. The first one is, can you tell me name the graph? Which type of graph it is? So the answer for this graph is, pause the video and write down the answer. The answer is, it is a non-uniform.
Why it is non-uniform? Because you can see that here it is equal distance in equal interval of time, but here break lag gaya na. Fine. So uniform is zigzag, so it shows a non-uniform graph. Okay. Next question is question number 2. Find speed of, let's give some number. ये क्या है? ये एक मूविंग बॉय है, एक बॉय है जो चल रहा है, ठीक, मिनट में, और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? मीटर में, ठीक है। तो 10 मिनट में ये 100 मीटर चलता है, फिर 20 मिनट में ये 200 मीटर चलता है, ठीक है। सो लेट्स मार्क इट एज ए पॉइंट कवर किया, फिर बी तक चला, फिर सी तक गया, फिर डी, फिर ई, फिर एफ। नाउ फाइंड आउट द स्पीड बिटवीन ए एंड बी। ए बी जब वो चल रहा था ए से बी तक, तो उसकी स्पीड कितनी थी? फाइन। सो लेट्स कैलकुलेट. इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट डाउन. स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. नाउ लेट्स सी हाउ मच डिस्टेंस इट हैज कवर्ड इन बिटवीन ए एंड बी. सो इसका जो डिस्टेंस कवर्ड है, लाइक दिस इज ए 100 200, तो डिस्टेंस कितने बीच में कितना हुआ? 100. इन दोनों को माइनस करो, आंसर इज 100. सो डिस्टेंस इज 100. नाउ लेट्स सी दोनों के बीच का टाइम कितना है? 10 और 20 बीच का टाइम कितना हुआ? बीच का टाइम मीन्स ये जो है ये कितनी देर में कवर हुआ? तो पहले 10 था, अब 20 मिनट्स हो गए, तो डिफरेंस क्या आया? 10 मिनट्स. सो आंसर विल बी 10 मिनट्स. ओके, इफ यू कैंसिल इट, answer will be 10 meter per minute. More question. Calculate speed of O to C. O C की स्पीड निकालनी है. Again you will put the formula. So don't forget to write the formula again and again. So again it is speed is equals to distance upon time. Let's see O से C तक कैसे चला है. O में डिस्टेंस इट वाज 0, यहाँ से अभी शुरू ही नहीं किया, यहाँ से शुरू किया, ठीक है. और C में कितना हुआ? 300. तो पहले 100 चला, फिर 200 चला, फिर 300. So what is the total distance covered between O and C? That is how much? It is 300. And what is the total time taken? So it is 10, 20 and 30 minutes. So it is again 30 minutes. If you cancel, answer is again comes to 10 meter per minute. Did you get my point? इसका मतलब ये हुआ. And you can also see that हमने पहले क्या निकाला था? हमने पहले A B निकाला, अब हमने O और C निकाला. And from the graph also it is clear कि ये यूनिफॉर्म मोशन है. क्यों? क्योंकि देखो स्पीड एग्जैक्टली दोनों की सेम आई है ना. It is same. So this shows also from the graph it is uniform motion. How uniform? Same distance, same interval of time. Okay. So now let's see the question number 4. Question number 4 is what is CD? CD क्या है? What is CD? CD means the object is please write down object is at rest position. Fine. So क्या हुआ? टाइम इंक्रीज हो रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा. वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट. ओके, फिफ्थ एंड द लास्ट वन दैट यू विल डू बाय योर ओन. फाइंड आउट द स्पीड ऑफ DF. You will do this and tell me the answer. Okay, find out the speed between D to F. So what we do? Just pause it, do it by your own, and then check the answer from here. So again the formula is speed is equals to distance upon time. Let's see the distance. Distance means total distance. So what is the total distance? 3 से शुरू हुआ था, कहाँ तक पहुंचा? 500. तो 100 यहाँ कवर हुआ, 100 यहाँ कवर हुआ. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? अगर नहीं समझ में आता तो ऐसे कर सकते हैं. डी पे डिस्टेंस कितना था? 300. फिर एफ पे डिस्टेंस कितना हो गया? 500. दोनों को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 200. इसका मतलब डी से एफ में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है? टोटल डिस्टेंस 100 यहाँ कवर हुआ, 100 यहाँ कवर हुआ. सो इट इज 200. ओके, नाउ लेट्स सी टाइम. डी पे था
40 मिनट्स, F पे पहुंच गया 60 मिनट्स. So 40 से 60 के बीच में कितना टाइम हुआ, जल्दी से बताओ. It is again 20 minutes. 40 to 50, 10. 50 to 60, 10. So 20 minutes. So again you just cancel. So answer will be 10 meter per minute. Why meter per minute? Meter, distance, minute, time. Okay. So in this way we can easily calculate the speed by using or by seeing the graph. This is a moving boy. Okay. I hope you understood the topic well. In case if you find any problem, you can ask me. We have learned many types of graph, like how to make a graph, slow motion, fast motion, uniform motion and non-uniform motion. Let's see how to identify the graph by a single click. So come to the first one. Horizontal side is what? Distance. Horizontal side is what? Time. Vertical side is distance. Time. Again it is distance. Time. Again it is distance. Okay. Here it is time and here it is distance. Again here it is time and this side it is distance, time and distance. Let's come to the first graph. The straight line indicates that the motion is in uniform. ठीक है? Why it is uniform? What is uniform? Uniform means equal distance traveling in equal interval of time. Equal distance traveling in equal interval of time. तभी तो same dots होते हैं ना, and we make a uniform line. Fine. So this shows the motion is uniform. Next come to the second one. Zigzag. If a graph is zigzag, that means जो object था, जो moving object था, वो थोड़ा straight चला, फिर it took some rest or it has changed the direction. Fine. So this type of graph is a non-uniform. Non-uniform. क्यों? बताओ क्यों? अभी तो सोचो यहाँ पे स्पीड उसकी बिल्कुल सेम थी, पर जब से टर्न लिया होगा तो स्पीड थोड़ी स्लो की होगी ना. So it is not uniform means equal distance. They are not traveling in equal amount of time. Fine. So it is non-uniform. Let's see the third one. Third one is a straight line. That means time is going on, but the distance is not traveling. So this graph is a stationary. Means the object जो है, what is an object? Object means the moving one. Object is at rest position. Fine. So this is a stationary graph. Let's see the next one. This is also a uniform graph. मगर the graph is towards time. इसका मतलब object is taking lots of time to move. Like I have given you one example, bullock cart wala. So this type of motion is known as slow motion. Okay. Now come to the next one. In this graph you can see the line of the slope of motion is towards distance. Distance की तरफ ज्यादा है. इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो बहुत तेजी से जा रहा है. क्यों? क्योंकि तभी उसने टाइम कंज्यूम कम किया है और डिस्टेंस बहुत कवर किया है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज फास्ट मोशन. Okay, fast motion. Fine. Now let's come to the last one. This type of motion again, which is not straight and taking a curve, is a non-uniform motion. So I hope it is clear. So children, if you like my video and understood the distance time graph well, please comment me and don't forget to subscribe and press the bell icon. Thank you for watching.